Okay, so class, this is the question, right? In the given figure, measure of angle COD is 45 degree. What is the measurement of angle BOE? Right? Now we are going to use our steps to build skills to solve this question. Okay? So हमको एक एंगल दे दिया है विच इज़ 45 डिग्री. कौन सा एंगल है? एंगल COD. अब नाउ एंगल COD देखो इन द फिगर, COD विच इज़ गिवन एज 45 डिग्री, राइट. हमको कौन सा एंगल पता करना है? BOE मीन्स ये नीचे वाला. ओके, द एंगल विच इज़ बिलो दिस लाइन, दिस एंगल वी नीड टू फाइंड आउट. ओके, now I cannot find directly 45 ये दिया है, so I cannot find out this angle directly without finding this angle. So first I have to find out this angle, and then with the help of supplementary angles का property I will find out this angle. So first I will find out angle DOB and then I will find out angle BOE जो हमारा final answer होगा. Okay, so I just wanted to let you go through with what method that we are going to use. All right, now class, our first step is assume x. So I will take the answer as x. This is how you're going to solve it. Okay, take assume x. किसको assume करना है? x जो हमारा फाइनल आंसर होगा, मतलब एंगल BOE. सो टेक एंगल BOE as x. Right, now after taking angle BOE x, first step done. Second step, आइडेंटिफाई द राइट एंगल इन द क्वेश्चन. नाउ राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है. सो इफ दिस एंगल दैट इज COB, ये जो एंगल है ये एंगल इज इट ऑफ 90 डिग्री, राइट. दिस इज द राइट एंगल. एंगल COB जो है राइट एंगल बना रहा है. सो आई हैव आइडेंटिफाइड राइट एंगल इन द गिवन फिगर, दैट इज एंगल COB. सो एंगल COB इज अ राइट एंगल, राइट. I will write this down, is the right angle. After identifying this, my step number 2 is done. We will go for step number 3. Write the complementary angles and use equation to find the missing angle. So what I have to do now, I have to write the complementary angles. So complementary angles क्या होते हैं class? As we know the meaning, complementary angles are sum of angles is equals to 90 degrees, then that angles are called complementary angles. और right angle जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है. That means this angle COB is a complementary angles, right. इसमें जो दो angles आ रहे हैं, when I add these two angles, ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. That means angle COD and DOB ये दोनों मिला के कितना होगा? 90 डिग्री. वेरी सिंपल. तो एक एंगल मुझे 45 दे दिया है, तो मैं दूसरा एंगल पता कर सकता हूँ with the help of equation. So I will write angle COD plus angle DOB, ये दोनों एंगल को प्लस करके मुझे कौन सा एंगल मिलेगा? एंगल COB which is of 90 डिग्री. This is the property of complementary angles. मैंने complementary angles का property लिख दिया. Now एंगल COD मुझे कितना दिया है? 45 डिग्री प्लस एंगल DOB इक्वल्स टू 90 डिग्री. अब इक्वेशन बन गया. दिस इज ऑफ एडिशन, अपोजिट ऑफ एडिशन subtraction. So I will subtract which number? 45 के 90, the number which is always with the variable. So I will subtract 45 on both the side. So I will write 45 plus angle DOB, right, plus 45, sorry, minus 45 na, we need to subtract 45 on both the sides. So 45 will get cancelled. यहाँ क्या बचेगा? एंगल DOB which will be equals to 45 degree. So एंगल DOB भी कितना मिल गया? 45 डिग्री. I will write it down in the figure. अब एक बार एंगल DOB मिल गया, I will follow my step number 4 and 5 to find out the measurement of angle BOE, right. Step number 3 done. तो हमने step number 3 का use किसके लिए किया था? To find out the measurement of this angle. ये दोनों मिला के 90 बनना चाहिए. Why? Because COB is 90 degree, right. Now I will follow step number 4. What is step number 4? Identify the straight angle in the question.
नाउ स्ट्रेट एंगल जो होता है, स्ट्रेट एंगल में हमेशा 180 डिग्री का होता है, और 180 डिग्री जो होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स में यूज होता है, राइट. द सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन दोज एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट. सो DOB ये एंगल एंड BOE ये एंगल दिख रहा है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है, दैट मीन्स दिस एंगल इज फॉर्मिंग अ straight angle. DOE, this angle is of straight angle. Straight angle means 180 degree, जिसमें DOB है और BOE है. So I have identified the straight angle, right? What is the straight angle? Angle DOE is a straight angle. अब मुझे straight angle मिल गया. I will use the equation. राइट. फिफ्थ स्टेप इज द सेम एज द थर्ड स्टेप, बट यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स का प्रॉपर्टी यूज करेंगे. राइट द सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड यूज इक्वेशन टू फाइंड द मिसिंग एंगल. सो आई विल राइट द सप्लीमेंट्री एंगल. सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? एंगल DOB प्लस एंगल BOE, दोनों को प्लस करके कितना आना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल्स में? 180 डिग्री. नाउ DOB कितना है? अभी मैंने पता किया 45 डिग्री. BOE I have taken it as x. I will write x there. 180 डिग्री, राइट. ये इक्वेशन कैसे आया समझा? DOB, मैंने DOB पता किया है 45 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. BOE जो है वो मैंने पहले से x ले लिया, राइट. फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था? अज्यूम इट एज x. सो आई हैव अज्यूम BOE एज x. सो आई विल राइट x हियर एंड 180 डिग्री. वाई? बिकॉज एडिशन ऑफ दिस टू angles is equals to 180, right? Because they are straight angles, and in straight angle we use the concept of complementary angles. This is done. Now once you know angle DOB, which is of 45 degree, right? So 45 degree plus x equals to 180 डिग्री, ये हमारा इक्वेशन बन गया था. नाउ व्हाट विल वी डू? वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन, राइट. प्लस है, उसका अपोजिट विल बी माइनस, और विच नंबर वी विल सब्ट्रैक्ट ऑन बोथ द साइड? 45. सो आई विल. सो क्लास, दिस आर योर फाइनल स्टेप्स. व्हाट डू यू हैव टू डू? दिस इज द इक्वेशन दैट वी रोट, राइट. नाउ व्हाट डू यू हैव टू डू इज you have to subtract 45 on both the sides. So 45 plus x minus 45, which will be equals to 180 minus 45. Now this and this will get cancelled. X is equals to 135. You can see the working note here, right? You can always do your working note by drawing a vertical line here and write down working note and then draw this, okay? So this is how you are going to solve this question. Let's do a quick recap of what we did so far. Now we know the steps. We know what are we supposed to find out. First we are going to take the answer as x. So I have taken down the answer as x. Then I have to identify the right angle. Right angle is always which is of straight, right, which is of 90 degree. So I have identified that COB is a right angle in this figure. After that find out what are the two complementary angles, right. Find out two complementary angles, write them down, use the property, use equation to solve the answer, right. Now मुझे ये एंगल मिल गया 45 डिग्री. आई नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल. सो फॉलो द नेक्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई द स्ट्रेट एंगल इन द क्वेश्चन. स्ट्रेट एंगल मीन्स जो हमेशा एक सीधा लाइन होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, विच इज ऑफ हाउ मच डिग्री? 180 डिग्री. नाउ सप्लीमेंट्री एंगल्स भी 180 डिग्री के ही होते हैं. सो सप्लीमेंट्री एंगल्स में ये एंड ये एंगल मिलाएंगे तो ये एंगल बनेगा. दैट्स वाई दिस प्लस दिस विल गिव यू 180 डिग्री. यूज द इक्वेशन, फाइंड आउट द आंसर. So we have you in this question, if you will notice, there is a mixture of complementary and supplementary. That's why the steps are also like that, okay.